The very first thing what we say is what are modals. हम modals किसको बोलते हैं? Use is the main, but what are modals? So we say that they are also called as auxiliary or helping verbs. They give meaning to your sentence. आपके जो sentences हैं उनको एक proper meaning जो है वही देते हैं. That means the use of modals is very important rather than what you want to write in a sentence. क्योंकि अगर आपने एक वर्ड की जगह कुछ और लिखा है तो द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस वुड चेंज. अब हम सेंटेंस के अंदर लाइक वी आर यूजिंग अ सेंटेंस, आई लाइक टू वॉच कॉमेडी. इसके अंदर इफ यू लुक वी हैव लाइक एंड वी हैव वॉच, यानी कि इसमें हमारे दो वर्ब्स हैं. तो जो वर्ब हमारे मेन वर्ब को मीनिंग देते हैं those are called as modals, and that is why we call them as auxiliary or helping verbs, क्योंकि वो इस वर्ब को जो हमारा अंडरस्टैंड मैंने लिखा है उसको इट इज गिविंग मैनर, मतलब वो इसको जो है इट इज गिविंग द एग्जैक्ट मीनिंग. ही मस्ट अंडरस्टैंड. अब ये मस्ट की जगह कैन होता तो इसका मीनिंग कुछ और हो सकता था, मे होता तो इसका मीनिंग कुछ और हो सकता था. तो दैट मीन्स the words which give the meanings and which makes the sentence into a perfect verbal sentence are modals. So what are the regular modals that we use in our work? अब जैसे for example I have taken this, we have three words different. He can understand, he may understand and he will understand. Now ये जो can था, this is showing that he has the ability, मतलब वो समझ सकता है, मतलब this there is मतलब वो कि वो समझ सकता है, वो इतना बड़ा है, वो इतना mature है that he can understand. Now he may understand is probability, यानी कि शायद, भाई पूछ के देख लो, पूछ के देख लो. He may understand and he will understand is a surety or you can say future. आपका कहीं ना कहीं assurance है या फिर वो future को reflect करता है. यानी the words have been changed but the main आपका जो verb है understand is the same, but a single change in the modal verb has changed the entire sentence. So that is where modals do work, right?
So now let us come to some of the very commonly used modals in our English language. Will, shall, would, should, can, could, may, might, must, ought to, then need to, has, have, had. These are some of the very commonly and frequently used modals in our English language. यानी कि जब आप अपने सेंटेंस को देखते हैं, जब आप अपने एडिटिंग को देखते हैं, तो in the sentence, for example, I have written he can understand, and the sentence may be telling you something about a probability, तो आपको can को ठीक करके may लिखना होगा. So that is where what we call as modals में आपके जो sentences हैं, editing या omission जो है, उसमें आपके आ सकता है. Now let us learn very quickly what are these meanings. हम will कहाँ use करते हैं, मतलब we will be just revising where we use all of these modals in our sentences. And if you are very well versed with these, believe me, it is not 9th or 10th or 11th or 12th. This will always help you out. First thing. And abhi, as I have been repeatedly telling that the pattern of exams to our universities change हो चुका है, तो जब आप अपने एंट्रेंस एग्जाम देते हो उसमें भी ये कवर होता है. So if you are thorough with these concepts, they will always help you out. will को हम यूज करते हैं फॉर फ्यूचर. if we use it as a future tense, tomorrow I will not go to the school, तो दिस इज रेफरिंग दैट मैं कल जो है स्कूल नहीं जाऊंगी. So here it is referring to the future. For example, I will not this can also be used as a willingness, a promise. It can also be used as a willingness, as a promise. Ma'am, sorry, next time I will bring my notebook positively. I shall or I will study hard. अब यहाँ पर जो I will study hard मैंने लिखा है, this is something promise, this is a willingness, this is not future tense. Means it is referring कि मैं आगे से अच्छे से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. Then it is also used for determination. This is also used for determination. Means I will see that he comes on time. मैं बार बार I use कर रही हूँ. That's a random sentence. Means wherever there is
a determination. I'll see that he sticks to his decision. मैं देखता हूं, मैं देखता हूं. And last but not the least is, it is also used for an assumption or a request, or a request. अब यहां पर he will surely come, yes, it is also a reference for the future. अब आप सोचोगे मैम हर चीज में फ्यूचर ही तो आ रहा है तो ये क्या है, मतलब, लेकिन यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं yes he will surely come. So this will for the future is used when we want to say something referring to assumption. Sorry beta, there was an important call. Next is wood. अब in a very in a single nutshell, would का मतलब तो वैसे हम यूज करते हैं for the past expressions of will. यानी कि जब हम फ्यूचर के बारे में ही बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, बट वो फ्यूचर भी जब पास्ट हो जाएगा, लाइक I would be a graduate by 2000 by 21 years. 21 साल तक तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी. तो I will
is not suitable. It is I would. I would. When we stayed in Bhopal, he would come daily. When we stayed in Bhopal, he would come daily. तो यहाँ पर जो would है, it is वो आया करता था उसके लिए. And also when we are talking about something in the future, I would have, उसके लिए we use would. This is past. This is past in future. This is past and this is past in future. मतलब मैं आप मतलब कि anything which we are talking about by 2030 ये काम हो चुका होगा. जो चुका होगा के लिए हम यूज कर रहे हैं that is would. Then we use it for polite request. देखिए बच्चा, रिक्वेस्ट जो है ना, इट इज अ पर्सनल व्हाट यू कॉल एज एक्सप्रेशन. तो जब हम किसी से बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन, तो इन अ पोलाइट वे वी कैन से कुड यू प्लीज, कर सकते, और वुड यू प्लीज, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. कुड यू लाइक नहीं हो सकता है, हम बोलते हैं वुड यू लाइक. This would is a politeness. Means when we are asking, आप पियोगे? Then one thing, wish, imagination or wish. How? I wish I wish you would be here. This is what we call as a wish. We can say, we can call it as an imagination. हम यूज करते हैं would. I wish you will be here नहीं, I wish you would be here. काश तुम यहाँ होते. So this is how we use will or would as a part of modals. अब यही क्वेश्चन में आपके when we are talking about the editing और editing part होगा, तो यही आपके वर्ड हो सकते हैं I wish you will be here. तो सेंटेंस वाइज तो यू विल बी हियर इज नॉट इनकरेक्ट, लेकिन एक्सप्रेशन वाइज इट इज इनकरेक्ट. एक्सप्रेशन वाइज इट इज इनकरेक्ट, एंड दैट इज वाई हम विल को एडिट करके, चेंज करके, रिप्लेस करके वुड लगा देते. So that is these are the rules for using will or would in a sentence. Now the second group of modal is shall or should. The second group of modals is shall or should.
Fastest we use, even though in the general nowadays हम लोग बहुत ज़्यादा उस बात पर बहुत अटल नहीं रहते हैं, but normally when we are using the words I or we, for the future one we use shall. For example, I shall start my preparations from next month. मैं जो preparations है अगले महीने से शुरू करूंगी. I will की जगह we use I shall when we are referring to the future tense. Next is when we are talking about a suggestion. As I have written, if you see, for advice, for suggestions, while we are using the first person and question. जैसे shall I close the door? Shall we go to the doctor? So when we are advising, here it is not a, it is an advice, but along with a question. It's a kind of question. So, shall I promise? While we are promising, it can be on the vice versa command also. If you do not work hard, you shall be punished. So determine a determination, a promise, a command when we are using with second or third person. If he does not work hard, if he does not work hard, क्योंकि आपका ही जो है वो थर्ड पर्सन है, he shall fail. Will is something which is very certain, and shall is something which is an assurance. Fail हो जाएगा वो, तो we use shall. Should. हिंदी में हम should जो है अगर हम exactly बोलते हैं तो this will be in चाहिए. But I need is also चाहिए. तो यहाँ पर when we are using, when there is duty, obligation, desire, advice, when our sentences are relating to something which is duty हमारी है, हमारी मतलब ये हम obligation है, we need to do it, एक desire है, some kind of advice है, we use should. Example,
The first sentence you should follow is your duty. It's your obligation. Whereas you should exercise daily. You should take your medicines regularly. This is an advice. I think I should go to park. This is a desire. मुझे ना पार्क जाना चाहिए. यहाँ पर जाना चाहिए is not an obligation. It's not जाना पड़ेगा. जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं should, it is करना पड़ेगा. You should follow traffic rules. Whereas this is something as an advice and a desire. I think I should opt for science. I think I should opt for commerce. This is a desire. अब मैंने नीचे लिखा थ्रेट, धमकी, जो हम आपको देते हैं. आपकी टीचर्स भी देती हैं, हम भी आपको देते हैं. शुड आई स्पीक टू योर पेरेंट्स? बताओ. इतनी शैतानियां करते हो आप लोग. शुड आई स्पीक टू योर पेरेंट्स? तो व्हेन वी से शुड आई, दिस इज, अगर देखा जाए तो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्रेट. सो व्हेन वी आर यूजिंग इन दैट मैनर, कभी आप अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हो और आप उसे कहना चाहते हो शुड आई स्पीक टू योर पेरेंट्स? बताओ तुम्हारे को इतनी परेशानी है, तो शुड आई एज अ डिजायर, एज अ थ्रेट व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो हम लोग जो है वी यूज शुड. तो दिस इज यूज ऑफ शुड. The next set is, you have seen I have written will, would, shall, should, can, could, may, might. So the next set which we have is may or might. और may और might दोनों का जो बहुत ही हल्का सा मीनिंग में डिफरेंस आता है. Both of them are actually used for something which is probable. शायद. अब अगर ज्यादा चांस है किसी चीज का तो हम मे यूज करते हैं. मोर प्रोबेबिलिटी होती है तो हम मे यूज करते हैं. एंड इफ इट इज लेस, बहुत कम चांस है, तो वी यूज माइट. फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्लाउडी. इट इज क्लाउडी. बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा बरसात हो सकती है, तो इट मे रेन हेवीली. Though it is cloudy, it might not rain, या it might rain slightly. तो जब लेस प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज की, मतलब आपको लगता है कि आई मे गो टू स्कूल टुमारो, है ना, आपने मन बना रखा कि कल तो मैं छुट्टी करूंगा या करूंगी. आपने बना रखा है कि मैं करूंगा या करूंगी.
तो आप बोलते हो आई मे गो टू स्कूल टुमारो, आई मे गो टू स्कूल टुमारो, शायद। और अगर कम चांस है तो आई माइट। We use may or might when there is possibility of more. may use करते हैं अपने sentences में। And yes, जब हम reported speech करते हैं, when we are using reported speech, then also हम may को change करते हैं into might। will को would में, shall को should में, can को could में, may को might में। तो वहां पर द मीनिंग डजंट चेंज, इट इज बिकॉज ऑफ द रिपोर्टेड वर्ड्स। नेक्स्ट हम मे यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू, वी आर हैविंग सम विश, जैसे मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ। तो दिस मे इज नॉट शायद, शायद भगवान आपको अच्छा मतलब कि हेल्प देगा, नहीं है। दिस मे इज यूज्ड एज अ विश। देन मे इज ऑल्सो यूज्ड फॉर परमिशन। मे आई, आप लोग अपने स्कूल में हमेशा यही बोलते हो, मे आई कम इन। सो व्हेन वी आर, मे आई, मैं हेल्प कर दूं, may I help you in this project? So when there is a permission in the form of question, we use may. Might is also used for guess. वो सो रहा होगा, मतलब the meaning is the same, but when we are speaking it in the tone of some guessing, शायद वो सो रहा होगा आराम से, तो we use might. The next set is can or could, क्योंकि इसके बाद जो ought to है, need to है, has, have, these are all general. Can we use it for ability, for permission, or possibility? He can walk 10 miles a day. This is the ability, मतलब उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो 10 मील चल सकता है। Now the question comes कि where do we use can and where do we use may?
where do we use can and where do we use may? See, may हम use करते हैं when we know that the answer will be yes. यहाँ पर when we need to have some ability, मैं ले सकता हूँ जब हमें लग रहा है कि शायद ना भी बोले. Can I take some more puddings? We use it. We can swap can and may. But may I come in is the right polite word to say. Can I come in is bit rude. Now next is could. As I said, may ka, might, shall ka, should, will ka, would. The first thing is can का आपका past tense होता है could. And one of the most common error we find in our editings. When I was 10 years old, I could swim. मतलब अब that is not there. I could swim when I was 10 years old. मतलब उस वक्त मेरे अंदर वो ability थी. And one of the most commonly misplaced error यही होता है आपका. Second is as a polite request. Could you please get aside? We don't say can you please. We say could you please? Could you wait for some time? And also for possibility. He could be here anytime. कभी भी वो आ सकता है, कभी भी ये हो सकता है. Possibility. It could rain anytime. It is heavily clouded. It can rain anytime. It could rain anytime. The modal must is for duty, for something which is necessity, which is zabardasti, compulsion. You must do what I say. This is a compulsion. आपको करना पड़ेगा. Children must not watch too much of TV. A kind of duty. Already I am late. I must reach on time. Necessity. जरूरी, मुझे टाइम पर पहुंचना चाहिए, पहुंचना पड़ेगा.
मस्ट का ही आप कह सकते हो सिनोनिम है ought to. ought to normally when we use it is either a duty or an advice. It is a moral duty. जैसे चिल्ड्रन ought not to watch टीवी नहीं बोलते हैं, must not ही बोलते हैं. ought होता है when there is some moral responsibility. You ought to obey your parents, your elders. ये हमारी moral responsibility होती है. तो must is also right. इसमें you must अगर आप लिख रहे हो तो right है. should भी right है, लेकिन should हम यूज करते हैं भाई आपको अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए. whereas must and ought जो है that gives a force, a duty, आपको करना पड़ेगा. and when it is a moral responsibility हम यूज करते हैं ought. लास्ट हमारा सेट है need to, has, have और had to. और ये सब हम यूज करते हैं when we are framing the sentence with necessity. किसी चीज की जरूरत है. I need to change my mobile. खराब हो गया है तो I need to change it. I need to change my mobile's number. When I have to हम अगर इसे में यूज करते हैं तो I have to, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है. Can you wait? I have to change my mobile. And I need to change is when I want to tell that something is my necessity. I have to go to the doctor. अभी for example, some students will say, ma'am, can we log off? We have to go to tuition. हमें जाना है. And has हम यूज करते हैं with he, she, it. She has to go to the doctor. और अगर हम इसे पास्ट रेफरेंस में करते हैं यूज had to. Which. So these are the basic modal verbs which we use in our day-to-day sentences, and as a part of your class 10 integral grammar, these would be coming in your paper as fill in the blanks with the right words, or it may be there in the editing omission. क्योंकि editing में क्या होता है, many of the concepts are joined. मतलब एक वाले में preposition wrong होगा, एक में modal wrong होगा, एक में tense wrong होगा. So there will be different kinds of editing. So that is how modals are used.